Hello 8th standard students. We were discussing about the brain teasers of algebraic identities, and now coming to the question number 12. Simplify 2.3 into 2.3 minus 0.3 into 0.3 divide by 2.3 into 2.3 minus 2 into 2.3 into 0.3 plus 0.3 into 0.3. Okay, write the question. It is a 2.3 into 2.3 minus 0.3 into 0.3 divide by 2.3 into 2.3 minus 2 into 2.3 into 0.3 plus 0.3 into 0.3. It's given like this. Now put the brackets. 2.3 into 2.3 minus 0.3 into 0.3. Now in the denominator 2.3 into 2.3 minus 2 into 2.3 into 0.3 plus 0.3 into 0.3. Now we will get an idea. When you put the bracket, you will get the idea. What is it? This one will become 2.3 2 times, means 2.3 the whole square, minus 0.3 the whole square, isn't it? In the denominator, it will be 2.3 2 times, means 2.3 the whole square. Now this one, keep it like this, minus 2 into 2.3 into 0.3, and this one is 0.3 the whole square. Okay, this one, now it became what? A squared minus b squared. Yes or no? This one is a squared minus b squared, and this one is a squared minus 2ab plus b squared. So here it became a squared minus b squared is equal to a plus b, a minus b. Now a is what? 2.3 and b is 0.3. Okay. Now in the denominator, it is a squared minus 2ab plus b squared. So which identity? A minus b the whole square. So a is what? 2.3 and b is 0.3. Understood? So you will write, it is 2.3 the whole squared minus 0.3 the whole squared. First write like this, and now this one will be 2.3 minus 0.3 the whole squared. Okay. Now this one will become what? A plus b, a minus b, means a plus b, a minus b. In the denominator, 2.3 minus 0.3 the whole square, means 2 times. So 2.3 minus 0.3 and 2.3 minus 0.3. The whole square means 2 times. Now numerator, denominator, 2.3 minus 0.3, 2.3 minus 0.3 gets cancelled, isn't it? One time it will get cancelled. Now what is remaining? It is a 2.3 plus 0.3. 3 plus 3 is 6 and 2 plus 0 is 2. In the denominator, 3 minus 3 is 0 and 2 minus 0 is 2. So it will become 2.6 upon 2.
That means 2 ones are 2 threes are. Answer is 1.3. Hope everyone understood. So first of all, write the question and put the brackets to see the identity. 2.3 into 2.3 ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.3 इंटू 0.3 दूसरे ब्रैकेट के अंदर, डिनोमिनेटर में 2.3 टू टाइम्स ब्रैकेट के अंदर, माइनस 2 इंटू 2.3 इंटू 0.3 एक और 0.3 दो बार. तो ऊपर का आया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दो बार आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे का आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वो फॉर्मेट में आया. तो अभी आइडेंटिटी लिखो. सो 2.3 माइनस 0.3 द होल स्क्वायर एंड द 2.3 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर, और नीचे आएगा 2.3 माइनस 0.3 द होल स्क्वायर. सो अभी ओपन करो. ए आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए माइनस बी दो बार. तो इसके लिए एक एक बार का कट होगा, फिर सॉल्व करने का. ओके. नाउ कमिंग टू द 13th सम. अभी ये सम्स थोड़े फिर से अलग अलग टाइप के हैं. चलो 13th सम, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 and xy is also given minus 1. Find the value of 9x squared plus 16y squared. अभी 3x माइनस 4y दिया है तो उसको हम उसका आइडेंटिटी लिखेंगे. 3x माइनस 4y द होल स्क्वायर, वो वाला आइडेंटिटी ले लेंगे. ठीक है. सो ये आएगा कौन सा वाला, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अभी a कितना है 3x है ना, b कितना है 4y, उसको डालो. a स्क्वायर 3x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a is 3x, b is 4y प्लस b स्क्वायर 4y द होल स्क्वायर. ठीक है. अभी आगे क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, x स्क्वायर माइनस 2 3s are 6, 6 4s are 24, 24xy प्लस अभी कितना आया 16y स्क्वायर. अभी इधर फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर. इसके लिए रीअरेंज करो. 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इधर लिखो माइनस 24xy. ओके. तो इधर किसका था 3x माइनस 4y द होल स्क्वायर है ना. अभी 3x माइनस 4y वैल्यू दिया है कितना 10, तो इट विल बी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करने का है तो उसको ऐसे ही लिखो माइनस 24 इंटू XY का वैल्यू कितना दिया है -1, तो इसको ब्रैकेट के अंदर डालो. तो 10 स्क्वायर कितना है 100. नाउ दिस इज राइट एज इट इज. Now this one will be minus of minus plus 24 ones are 24. Now 9x squared plus 16y squared, keep it here. So this one will be 100. 24 will come this side. It will be minus 24. That means 9x squared plus 16y squared will be 10 minus 4 is 6.
Now how much is remaining? 9. 9 minus 2 is 7. So the answer is 76. So they have asked to find out 9x squared plus 16y squared. But they have given the value of 3x minus 4y and xy. So you have to square 3x minus 4y the whole square and write the identity, rearrange, then put the values. So 3x minus 4y का value 10 है, 10 square और 9x square plus 16y square find out करने का minus 24 into xy का value -1, फिर value डालकर solve करने का. Is it clear? This is about the question number 13. Okay. Now coming to question number 14. Now question number 14 is a 5x minus 2y is equal to 7 and xy is 2, but they have asked 5x plus 2y the whole square. They have given the value of 5x minus 2y and they have asked the value of 5x plus 2y the whole square. Okay, so first we will take 5x minus 2y the whole square. पहले सम के जैसे ही पहले ये करने का. So 5x minus 2y the whole square. कौन सा वाला आइडेंटिटी? a minus b the whole square is equal to a squared minus 2ab plus b squared, and a is equal to 5x and b is equal to 2y. ठीक है, तो a बनेगा 5x the whole square minus 2 into 5x into 2y, isn't it? A squared minus 2ab plus b squared, that is 2y the whole square. Okay, now open the brackets. So this one will be 5 squared is 25 x squared. Now this one will be 5 2s are 10, 10 2s are 20 minus 20 xy. This one will be plus 4y squared. Now rearrange. Okay, 25 x squared, just like the earlier sum, 4y squared, write first, minus 20 xy. This is what? 5x minus 2y the whole square. Now 5x minus 2y is given how much? 7. So 7 squared is equal to 25x squared plus 4y squared minus 20 into xy is 2. So 5x minus 2y is given, xy is given, put the values. Now this one will be how much? 7 square is 49. Now 25x squared plus 4y squared minus 22s are 40. Okay. Now keep 25x squared plus 4y squared. Now 49. Now take minus 40 to the other side. It will be plus 40. Okay. So it will be 25x squared plus 4y squared is equal to 49 plus 40 is 89. So you got 25x squared plus 4y squared. Now we have to find out what? 5x plus 2y the whole square. So put the value 5x plus 2y the whole square. अभी नेक्स्ट स्टेप. सो ये हाफ सम ही हुआ, हमें अभी 5x plus 2y square the whole square. So
This is a plus b the whole square is equal to a squared plus 2ab plus b squared. Now a is equal to 5x, b is equal to 2y. Now it will be 5x the whole square plus 2 into a into b plus b square. ठीक है. अभी 5x the whole square will be 25x square. Now bring this here. Already आपको मालूम है ना. So 2y the whole square will be 4y square plus 2 5s are 10, 10 2s are 20xy. अभी आपको ऐसे मिला. अभी इसका वैल्यू कितना है 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. इधर हम फाइंड आउट किए कितना 89 प्लस 20 इंटू xy is 2. So it will be 89 plus 22s are 40. So it will be 9. 8 plus 4 is 12. So 5x plus 2y the whole square is equal to 129. Little bit lengthy sum. So hope you have understood. So they have given the value of 5x minus 2y the whole square and xy is given. So like in the earlier sum, put the identity, isn't it? 5x minus 2y is given. So you square it, you will get the identity a minus b the whole square and find out the value of 25x squared plus 4y squared. कैसे? So 25x squared minus 20xy plus 4y squared. Now it became 4y squared को पहले लेने का, फिर minus 20xy, values डालो, values को solve करो, you will get 25x squared plus 4y squared, that is 89. But they have asked 5x plus 2y the whole square. फिर से उसका आइडेंटिटी लिखो, फिर 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ऑलरेडी हम सॉल्व किए हैं, xy का वैल्यू डालो, विल गेट द वैल्यू. क्लियर? नाउ कमिंग टू द 15th sum. So 15th sum is if a plus 1 by a is equal to 17 by 4, find the value of a minus 1 by a. तो 14th sum के जैसे ही है ना, almost the same. Hope now you can understand properly, isn't it? So a plus 1 by a value is given, so you square it. So it is a plus b the whole square. It is a squared plus 2ab plus b squared. A is a, b is 1 by a. Okay. So it will be a squared plus 2ab. ओके. क्यों मैं ए बी सब बोलती हूँ? मतलब आइडेंटिटी बोलने का, उसके हिसाब से ये वैल्यूज डालने का. नाउ बी स्क्वायर दैट इज 1 बाय ए द होल स्क्वायर. नाउ ए स्क्वायर प्लस, ब्रिंग दिस फर्स्ट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस a and a gets cancelled, it will be 2. इसके लिए इधर xy का वैल्यू नहीं दिया है. ओके पहले का 14th सम के जैसे xy का वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि वो इट गेट्स कैंसल्ड. ओके नाउ 1 बाय इट इज व्हाट a प्लस 1 बाय a is given. So a plus 1 by a the whole square. You got this much. उसका वैल्यू डालो कितना 17 by 4 the whole square
is equal to a squared plus 1 by a squared plus 2. Now this one will be 17 squared, you know, 289. 4 squared is 16. Now to bring this side, it will be minus 2 a squared plus 1 by a squared. Now a squared plus 1 by a squared will be, you have to take 16 as the LCM, 289. Numerator will be the same, and here it will be, denominator is 1, 1 16s are 16 2s are 32. 9 minus 2 is 7, 8 minus 3 is 5, and 2 upon 16. This is a squared plus 1 by a squared. But now you have to find the value of a minus, okay, a minus 1 by a the whole square. They have asked a minus 1 by a, but you have to find this first. That means a minus b the whole square. A squared minus 2ab plus b squared. A is equal to a, b is equal to 1 by a. Okay, this one will be a the whole square minus 2 into a into b plus b square. Okay. Now a squared, right? Bring this here. It will be 1 by a squared minus a कट होगा -2. अभी आपको a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर वैल्यू मिला है 257 अपॉन 16 -2. समझ में आया? ए वैल्यू आपको इधर मिला है. अभी एलसीएम में 16, ये रहा 257 माइनस इधर डिनोमिनेटर इज 1 16s are 16 2s are 32. Okay, it is now how much? 7 minus 2 is 5. Now here is 5 minus 3 2 and 2 upon 16. So you got a minus 1 by a the whole square is equal to 225 upon 16. Now they have asked how much a minus 1 by a will be square root of 225 upon 16. Square root of 225 is how much? 15. 16 square root is 4. So answer is 15 by 4. Hope you have understood. So they have given a plus 1 by a का वैल्यू दिया है. a minus 1 by a को फाइंड आउट करने को बोला है. तो a plus 1 by a the whole square को उसका आइडेंटिटी लिखो. फिर आपको a squared plus 1 by a squared मिलेगा. कैसे? a plus b the whole square. a squared plus 2ab plus b squared. a is a, b is 1 by a. और a gets cancelled. So a plus 1 by a the whole squared is equal to a squared as it is इधर लिखो 1 by a squared को पहले लिखो प्लस a कैंसिल हुआ इसके लिए प्लस 2 आया. अभी a plus 1 by a का वैल्यू दिया है 17 by 4.
So 17 by 4 the whole square is equal to a square plus 1 by a square plus 2. अभी 17 स्क्वायर कितना है 289 अपॉन 4 स्क्वायर इज 16. अभी प्लस 2 को इस तरफ ले लो माइनस 2 दैट इज ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर. मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 289. ऐसे ही रहेगा 16 इज द एलसीएम 289 वैसे ही रहेगा लेकिन 2 बनेगा 32. क्यों 1 16 जा 16 2 जा 32. सॉल्व करने के वक्त आपको आया 257 बाई 16. तो वो किसका वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर. लेकिन हमें चाहिए a माइनस 1 बाई ए. तो इसके लिए a माइनस 1 बाई ए द होल स्क्वायर फाइंड आउट करने का. इसके लिए a माइनस बी द होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो a इज a b इज 1 बाई ए. अभी a स्क्वायर इधर लिखो प्लस 1 बाई ए स्क्वायर को पहले लिखो. अब इधर आया a गेट्स कैंसल्ड इसके लिए माइनस 2. अभी a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का वैल्यू हम निकाले कितना 257 बाई 16. इसको लिखो माइनस 2. अभी एलसीएम निकालो 16 257 एज इट इज 16 1 16 जा 16 2 जा 32. 7 minus 2 is 5. 5 minus 3 is 2 and 2 denominator is 16. लेकिन हमें a minus 1 by a फाइंड आउट करने का. इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 225 by 16 दैट इज 225 का 15 है 16 का 4 स्क्वायर रूट. सो द फाइनल आंसर इज 15 by 4. Okay. With this, we have completed the lesson Algebraic Identities Brain Teasers. The last few sums are little bit difficult, confusing. So please solve these sums again and again so that you are familiar with those sums. It will be easy. Understand how it has to be done, then it will be easy. Okay then, bye. Thank you. Take care.